What is proprioception, which is also known as kinesthesia? Proprioception is the sense of self-movement and body position in space. It allows to maintain body posture while any movement like walking, standing upright, jumping, etc. by adjusting muscle activity to provide balance. Jumping between the objects helps in developing kinesthetic or proprioceptive sense, as it involves understanding the distance to be jumped and maintain body balance to avoid fall and keep standing. Variation in this activity can be made by forward jumping, backward jumping, or jumping to the sides. इस एक्टिविटी की डिफिकल्टी और चैलेंज लेवल को इंक्रीज या डिक्रीज भी किया जा सकता है by decreasing or increasing the distance or increasing or decreasing the height of the objects. Running and keeping the ball at a certain target involves almost all muscles of the body so as to maintain balance between them and environment. कितना डिस्टेंस कवर करना है, कहाँ बॉल रखना है, कहाँ रुकना है, इन सब के लिए ये एक्टिविटी बेनिफिशियल है। Counterbalance. It helps the proprioceptive senses of body to get trained about the right amount of pressure and force to be applied so as to maintain a balance in posture to be held. 9, 10, 11. The difficulty level can be altered by increasing or decreasing the time to balance the body. Counterbalancing with ball. It is a similar kind of activity to counterbalance, but it poses much more challenge to the kinesthetic senses, thus developing better sense of balance for body posture and environment with respect to force applied, depth, muscle strength required, etc. Apart from it, taking a ball, transferring the ball to the partner and then putting it to a target increases the difficulty level of this activity. It also increases focus and attention span of the child. This activity provides the feedback to joints and muscles so as to how much force is required and in which direction and position to transfer the ball to the other partner. This activity provides proprioceptive inputs to the body and makes the body understand how to act in order to maintain a posture or a position. Such activity provides deep joint pressure, thus helps in developing proper proprioceptive inputs. Maintaining single leg stance provides feedback to proprioceptive senses to maintain balance between body and space. This activity also trains the muscles कि एक बॉडी पोस्चर मेंटेन करने के लिए किस किस मसल्स को कैसे काम करना है। इसके अलावा
हम और भी छोटी छोटी एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं जिसमें हैंड मसल्स भी इम्प्रूव हों और ये ज़्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव चैलेंजेस प्रोवाइड करें। Taking books or any object in shelf at a particular manner. In this activity, different weight and different sizes of the books help to provide rich proprioceptive feedback or inputs so as train the body in various circumstances. ये एक्टिविटी अ काइंड ऑफ एडियल और एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग है, जिससे ये एडियल तो इम्प्रूव हो ही रहा है, साथ में ये प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे कि प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस काफ़ी डेवलप होते हैं और जो डे टू डे लाइफ में चैलेंजेस आते हैं प्रोप्रियोसेप्शन को लेके, वो भी काफ़ी हद तक डिक्रीज होते हैं। Monkey bar activity provides heavy joint pressure along with appropriate positioning of muscles and joints so as to provide rich proprioceptive inputs to the body. इस एक्टिविटी से मसल्स की कंडीशनिंग भी हो जाती है कि ऐसे मूवमेंट्स में कैसे बॉडी एंड मसल्स को एडजस्ट करना है। Target high jump activity. The height of rope to be jumped upon needs the understanding about the depth and height in relation to space and the requirement of body to act according to the feedback from proprioceptive senses. Moving a heavy rope in various patterns need varied amount of force, direction and positioning of the body. It provides heavy joint pressure, joint compression and very rich proprioceptive inputs to the body and muscles. ये एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा प्रोप्रियोसेप्टिव चैलेंजेस प्रेजेंट करती हैं, तो इससे क्या होता है कि बॉडी और भी ज़्यादा वेरियस चैलेंजेस जो इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होती हैं उससे अपने आप को एडजस्ट करने की कैपेबिलिटी को धीरे धीरे इंक्रीज करता है। Playing cricket is a very diverse kind of activity. ये एक्टिविटी हेवी जॉइंट कंप्रेशन तो प्रोवाइड करती ही है, इसके साथ साथ ये प्रोप्रियोसेप्टिव सेंसेस, वेस्टिबुलर सेंसेस, फोकस, अटेंशन, देन मसल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ों को साथ में साइमल्टेनियसली इम्प्रूव करता है। वैसे भी playing any kind of sports is very good for physical and mental health. इसलिए अपने अंदर के बच्चे को जगाए रहिए and keep playing. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe.